नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I'm very happy to be with all of you this evening for this Sunday feast program. And we will today read the 8th verse of the 16th chapter of Bhagavad Gita. महाराज भगवद गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, which explains the way of thinking of people who are demoniac by nature. तो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राक्षसिक प्रवृत्ति के होते हैं. We see now that in the world today so many tragic events take place. हम आज के विश्व में देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं. War is going on in Europe between Russia and Ukraine. रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है. And actually wars are always there in one place or another. People kill each other. People inflict sufferings to each other. Sometimes without any reason. Sometimes without any reason. किसी कारण नहीं है. Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Shri Krishna explains very nicely in the 16th chapter of Bhagavad Gita what is the reason behind it. भगवान कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसके बारे में पूरी तरह से बताते हैं. And this is a very practical chapter of Bhagavad Gita. ये बहुत ही practical अध्याय है भगवद गीता का 16वां. Of course, every chapter of Bhagavad Gita is very practical. वैसे तो हर अध्याय भगवद गीता का बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल है. But this chapter of Bhagavad Gita is especially relevant in the modern world. और ये जो भगवद गीता का अध्याय है वो पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसको साफ-साफ बताता है. Because we can see that this demoniac forces in this world becoming stronger and stronger and stronger. हम देख रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां इस विश्व में और तीव्रता से बढ़ रही हैं. Here in India, it's also being felt to a certain extent. भारतवर्ष में भी इस चीज के बारे में हम देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है थोड़ी हद तक. And I'm coming myself from Russia. I spent most of my life there, and I know how difficult it is to live there. महाराज श्री स्वयं रक्षा में कई वर्ष रहे हैं और उनको पता है कि वहाँ रहना कितना मुश्किल है. And if we know very well what Krishna says in Bhagavad Gita, it can be like a vaccine against this demoniac mentality. Vaccine against the demoniac mentality. भगवान कृष्ण ये राक्षसी प्रवृत्ति के अगेंस्ट की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं.
You know, people are very much into this Covishield and other vaccines against COVID. लोग आजकल कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन किसी बीमारी के खिलाफ ऑलरेडी ले रहे हैं. This is the medicine which prevents you to become diseased. ये जो मेडिसिन होती है वो आपको बीमार होने से रोकती है. But COVID is a very small disease. पर जो कोविड है वो एक बहुत ही छोटी बीमारी है. Much more serious, deadly disease is this demonic mentality. पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है राक्षसी प्रवृत्तियाँ. So it's very good if we take vaccine of Bhagavad Gita every day. अगर हम भगवद गीता का रसीकरण रोज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. Covishield you can only take once or twice or 3 times, not more. But Bhagavad Gita you can take every day. कोविशील्ड जैसी वैक्सीन हम 2-3 बार ले सकते हैं, पर भगवद गीता का जो रसीकरण है वो कर सकते हैं. And whether Covishield is a shield, whether it will protect from COVID or not, it's not clear. कोविशील्ड वो ऐसी चीज है कि अगर वो कोविड से रक्षा करेगी कि नहीं, इसकी कोई खास करेगी तो नहीं है. But Bhagavad 100% will protect you. पर भगवद गीता का रसीकरण आपको प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा. It's time-tested medicine. दवाई है. For 5,000 years it has been a very scientifically proven medicine against all kind of material diseases. किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं के खिलाफ पिछले 5,000 साल से लगातार ये जो मेडिसिन है वो काम कर रही है. Because ultimately all the diseases, either our sharirik diseases, diseases of our body or diseases of our mind, or diseases of social diseases, diseases of the society, they all come from the mind. जो पूरी सोसाइटी की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो सोशल हो, बॉडी हो या कोई भी और हो, उसकी जो जड़ है वो अपना मन है. And if we purify our mind by reading Bhagavad Gita every day, then we will be disease free. अगर हम अपने मन का शुद्धिकरण भगवद गीता के पाठ से हर रोज करते हैं तो वो इस बीमारी से मुक्त होगा. Our body will be free from disease, our mind will be free from disease, and our society, our family will be free from disease. इससे हमारा शरीर, मन, समाज सब कुछ बीमारी से मुक्त हो सकता है. Okay, so we'll read the verse. Please chant with me. It's very important verse for us to know. Asatyam apratishtam te. Asatyam apratishtam te. Jagadahuranishwaram. Jagadahuranishwaram. Aparaspara sambhutam. Aparaspara sambhutam. Kimanyat kamahaitukam. Kimanyat kamahaitukam. Asatyam apratishtam te. Jagadahuranishwaram. Aparaspara sambhutam. Kimanyat kamahaitukam. So translation and purport by Srila Prabhupada. They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता. उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है. The purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा. The demonic conclude that the world is phantasmagoria. There is no cause and effect, no control or no purpose. Everything is unreal.
आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया का है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। They say that this cosmic manifestation arises due to chance, material actions and reactions. उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। They do not think that the world was created by God for a certain purpose. वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी विजन से इस संसार की रचना की है। They have their own theory that the world has come about in its own way and there is no reason to believe that there is God behind it. इनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। For them there is no difference between spirit and matter. उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है। And they do not accept the Supreme Spirit. और वे परमात्मा को भी स्वीकार नहीं करते। Everything is matter only. उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है। And the whole cosmos is supposed to be a mass of ignorance. और यह पूरा जगत मात्र ज्ञान का पिंड है। According to them, everything is void. उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है। And whatever manifestation exists is due to our ignorance in perception. और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। They take it for granted that all manifestation of diversity is a display of ignorance. वे इसे सच मान बैठते हैं कि विविधता में यह सारी सृष्टि अज्ञान का भाग प्रदर्शन है। Just as in a dream, we may create so many things which actually have no existence, so when we are awake, we shall see that everything is simply a dream. जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। But factually, although the demons say that the life is a dream, they are very expert in enjoying this dream. लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े प्रवृत्त हैं। So I will speak a little bit and then maybe at the end we'll read the end of the purport. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshitarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swasyastu Vishwasya Kalah Prasidatam Vyayantu Bhutani Simam Mithodya Manascha Padram Vajatata Dokshache Aveshyatam Naumati Apyahaituki. So, Sri Krishna very clearly speaks about the beginning, the seed of demoniac mentality. कृष्ण भगवान यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति के बीज और प्रारंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। He explains that the seed of demoniac mentality is denial of the existence of God. राक्षसी प्रवृत्ति का जो बीज है वो भगवान के अस्तित्व का अस्वीकार करना ही है। Asatyama pratistam te jagatahuraniswaram. When we see this world, every normal human being asks, where it is coming from? जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, कोई भी मनुष्य पूछ सकता है कि इसका स्रोत क्या है? What is the reason of this huge material manifestation? इतने बड़े भौतिक जगत का अस्तित्व का कारण क्या है? But those people who have this demoniac mentality, they say it just happens by chance. परंतु राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ये कहते हैं कि ये जस्ट चांस से
मौके से हुआ है। It doesn't make any sense. Nothing happens by chance. तो किसी तरीके से ये बात हमें बचती नहीं है कि कुछ भी कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती है। Now, can you say that this building happened by chance? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है, ये बिल्डिंग है, ये बाई चांस खड़ी हो गई है? If Yashomatinandan Prabhu and his team, would get this land and they would sit and say, let's wait a little bit. Maybe by chance this building will come up. अगर यशोमतीनंदन प्रभु और उनके जो भक्तगण थे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता कि हमने ये जमीन ले ली है, अभी अपने आप ये मंदिर हो जाएगा बाई चांस, तो ये संभव था क्या? Does it make any sense? It doesn't make any sense. It's stupid. इस चीज के ऊपर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मूर्खतापूर्ण है। But big scientists with big brains, they say it's all happened by chance. परंतु तथाकथित वैज्ञानिक अपने बड़े दिमाग को यूज करके कहते हैं कि ये सब अपने आप बाई चांस हो रहा है। There was a little story about Newton. There was this very big scientist in the 17th century. He was a big physicist, Isaac Newton. So he was believing in God. He was believer in God. 17वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन स्वयं भगवान में विश्वास करते थे। But he had a friend, also scientist. His friend didn't believe in God. परंतु उनके दूसरे वैज्ञानिक मित्रगण जो थे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। And they were always arguing with each other whether there is God or there is no God. उनके बीच हमेशा विवाद बहस होती रहती थी कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। So at one point he decided to make a different move to prove to his friend that there is God. एक बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं भगवान के अस्तित्व का जो भी प्रूफ है मैं अपने मित्रों को दूंगा। So he made a big model of the solar system with sun in the center and earth and all the planets. So beautiful model of solar system. तो न्यूटन जी ने बाद में एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम जो सूर्यमाला होती है वो बनाया, उसमें बीच में सन रखा, ग्रह रखे। And he placed this model in his office. और अपनी ऑफिस में कार्यालय में इसको रख दिया। And next time when his atheist friend came to his office, he saw this model and this model was so beautiful. He started looking at it and he said, "Oh yes, very beautiful model. Who did it?" उनके मित्रगण आके पूछने लगे कि इतना सुंदर सौरमंडल आपने बनाया है, किसने बनाया है? And Newton said, "Nobody did it." न्यूटन ने बोला कि किसी ने नहीं बनाया है। He said, "You're joking at me. What does it mean nobody did it?" He said, "No, it just happened." जो दूसरे वैज्ञानिक मित्रों ने कहा कि मेरे साथ आप मजाक कर रहे हैं क्या? It just appeared like this. अपने आप कैसा है सकता है? न्यूटन ने बोला नहीं, वो अपने आप ही आ गया। "Why you're joking at me?" the friend said. Why you are saying this? It cannot appear like this. दूसरे मित्रों ने बोलने लगे कि अपने आप को ये चीज नहीं आ सकती, क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं आप? He said, if this little tiny model cannot appear like this, how this world can appear on its own without any reason? इसी लॉजिक से न्यूटन ने बोला कि अगर ये छोटा सा सौरमंडल का मॉडल अपने आप नहीं आ सकता, तो जो सत्य में इतनी बड़ा सौरमंडल है वो अपने आप कैसे आएगा? It's so clear that this world is created for a purpose by a creator which is infinitely greater than us. इतना साफ है कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है वो किसी उद्देश्य के साथ की गई है और उन्होंने इसका रचना किया है जो हमसे बहुत बड़े है। But nevertheless, these people say there is no God. फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। I'm coming from Russia, and Russia for some time was a very strictly atheistic state. हमारा श्री स्वयं रशिया से है और वही रशिया कुछ समय तक एक नास्तिक राष्ट्र था। When I was a little child, I was taught that there is no God. हमारा श्री स्वयं जब एक छोटे बच्चे थे, उनको यही बताया गया था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। In my family, my parents didn't believe in God. My grandparents didn't believe in God. Although my grandmother, she believed in God.
महाराष्ट्र के उनके परिवार में उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनको भगवान में विश्वास नहीं था, परंतु उनके जो परदादा दादी हैं उनको भगवान में विश्वास था। And when I was 6 years old, I was preaching to my grandmother that there is no God. जब महाराष्ट्र 6 साल के थे तो अपने परदादी को वो बताते थे कि नहीं, भगवान का अस्तित्व नहीं है। Some 60 years later, I'm preaching to you that there is God. और वही 60 साल के बाद महाराष्ट्र स्वयं भगवान के अस्तित्व के बारे में हमें बताया। Because it doesn't make any sense. क्योंकि इस चीज को कभी भी समझा नहीं जा सकता। But this sort of idea is not innocent because it has a very grave consequences. ये जो विचार है वो एक बहुत ही निर्दोष विचार इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बहुत ही खराब असर पड़ सकता है। And ultimately, Srila Prabhupada explains very beautifully why people do not believe in God. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत साफ-साफ बताते हैं कि कुछ लोग भगवान के अस्तित्व में विश्वास क्यों नहीं करते हैं? Because they do not want to obey His will. क्योंकि वो भगवान की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। Because they want to do what they want to do. They don't want to follow anything, any rules. क्योंकि वो कोई भी प्रकार के नियमों का पालन न करते हुए अपने मनगढ़ंत चीजों को ही करना चाहते हैं। Like sometimes a little child, when he becomes angry at his parent, कभी-कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता-पिता के प्रति खूब गुस्सा होता है। yeah, if he becomes very angry at his parents, he puts over a blanket over himself and says, "You don't exist." जब वो क्रोध द्वारा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, तो अपने ऊपर वो एक ब्लैंकेट डाल देता है, ऊपर वो बोलने लगता है कि मेरे माता-पिता है ही नहीं। Because why he becomes angry? Because mother and father don't allow him to do what he wants to do. वो क्यों माता-पिता से क्रोधित होता है? क्योंकि वो माता-पिता बच्चे को वो हर चीज़ नहीं करने देते हैं जो वो करना चाहता है। He wants to do all kinds of nonsense. Mother and father say, "Don't do it, don't do that, don't do this," and then he becomes very angry and he says, I don't want to have anything to do with you. जब बच्चा ये देखता है कि जब माता-पिता ये देखते हैं कि बच्चा हर प्रकार की गलत चीजें कर रहा है, तो वो उनको रोकते हैं और ये देख के बच्चा उनसे पूरा दूर जाना चाहता है। And then he says, in the same way, as Srila Prabhupada explains, people put ignorance over their consciousness in the same way as the child puts blanket over his eyes. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे ये बच्चा अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दे रहा था, लोग अपने बुद्धि के ऊपर इग्नोरेंस की चादर ओढ़ लेते हैं। There was one very big scientist recently, he passed away recently, his name was Dawkins in England. इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हॉकिंस नाम का, वो अपने शरीर को छोड़ चुका है। He was considered one of the most intelligent people on the earth. उसको बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति माना जाता था। His IQ was 200 or 2000, I don't remember which, but he was very high IQ. इसका जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो होता है IQ, वो बहुत ही ऊपर था। But because he was demoniac inside his heart, he didn't believe in God. क्योंकि उसके हृदय में राक्षसी प्रवृत्ति का वास था, वो किसी भी तरह भगवान में विश्वास नहीं कर पाया। What was the result of his intelligence? He said, "This earth is finished, it's already spoiled, there is no hope for this earth, let's find some other planet and go to other planet and live in another planet." उसकी भ्रष्ट बुद्धि का परिणाम ये था कि उसने निष्कर्ष निकाला कि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, अभी हमें धीरे-धीरे दूसरे ग्रह पर वास करने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। When people stop believing in God, they uproot the existence of their soul. The soul doesn't exist for them either. जब लोग भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं, वो स्वयं उनकी आत्मा के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं,
आत्मा का अस्तित्व भी भगवान के अस्तित्व के सिवा नहीं रह सकता। If God doesn't exist, the soul doesn't exist, what exists? Only material enjoyment. अगर भगवान का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है, तो किसका अस्तित्व है? Then the meaning of life is just to squeeze out material enjoyment as much as possible. तो उनका लक्ष्य जो है भौतिक सुविधाएं जितनी हो सके उतनी ज्यादा लेने का हो जाता है। And as a result of this, everything is being destroyed. This mentality is very destructive mentality. और इसी कारण चीजों का विनाश हो रहा है, क्योंकि ये जो माइंडसेट है वो विनाशकारी है। Srila Prabhupada, when he came, he said that the humanity is in a very critical condition in this moment of time. श्रील प्रभुपाद जब यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि मानवता बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। The solution for all the problems is not to go to another planet, as this Dawkins say. जैसे इस वैज्ञानिक ने कहा, उस प्रकार से दूसरे ग्रह में जाना ये किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। Because if people with the same mentality go to another planet, very quickly they destroy another planet. अगर यही मानसिकता के साथ यही लोग दूसरे ग्रह पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो इस तरह का विनाश ही करेंगे। And even before that, they will destroy everything. They will destroy their body. They will destroy their mind. Everything is being destroyed. वो खुद का शरीर, मन सब कुछ विनाश कर देंगे। You know, like I'm living in Vrindavan. I've spent a lot of time in Vrindavan and Govardhan. It's supposed to be a very holy place. महाराज जी स्वयं वृंदावन गोवर्धन जैसे तीर्थ स्थानों में निवास करते हैं। But every now and then I see the shop and it is said, Western sharab, the Western wine. पर वहाँ पे भी महाराज को ऐसे बोर्ड देखने को मिलते हैं कि विदेशी शराब। This destructive mentality is coming from the west to the east and it's destroying everything. ये विनाशकारी बुद्धि पश्चिम की तरफ से आ रही है और वो हर किसी का विनाश कर रही है। I remember one time I was driving in a car in Delhi and I saw a big billboard with the new movie from Bollywood. महाराज जी जब दिल्ली में जा रहे थे तो उन्होंने एक बॉलीवुड की मूवी का बहुत ही बड़ा पोस्टर देखा। And in this, billboard there was a macho man and there was some woman running or something like this. I don't remember what was there. Some ugly picture was there. महाराष्ट्र ने देखा कि उस पोस्टर के ऊपर एक अभिनेता अभिनेत्री के बहुत ही विकृत फोटो थे। And the name of the movie was The End of Innocence. और उस मूवी का नाम था The End of Innocence, निर्दोषता का अंत। And I was thinking, the end of innocence, the beginning of nonsense. महाराज जी कह रहे हैं कि निर्दोषता का अंत होता है तब innocence की शुरुआत होती है। When people lose their innocence, they become nonsense, total nonsense. जब लोग अपनी निर्दोषता भूल जाते हैं तब वो लोग बहुत ही मूर्ख हो जाते हैं। The most important quality of the soul is the purity of the soul. आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है उसका शुद्धिकरण। By nature, we are very pure. हमारा स्वभाव ही बहुत ही शुद्ध होना है। But under the influence of the bad association, we become impure. परंतु खराब संगत के कारण हम लोग अशुद्ध होते जा रहे हैं। And because of this, the destructive mentality takes precedence. They take over our mentality and we start destroying ourselves and everyone else. और इसी कारण ये विनाशकारी बुद्धि हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है, जिससे हम खुद को और दूसरे का विनाश करना सीखते हैं। And the only protection from this destructive mentality is the faith in God. और इस विनाशकारी बुद्धि को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है कि हम भगवान की तरफ मुड़ें। And Srila Prabhupada explains that the best way to always remember about God, to strengthen the faith in God and to get the real experience of God is to chant His holy names. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि
भगवान को याद करने का, भगवान की तरफ मुड़ने का और इस भौतिक जगत के परे जाने का सबसे अच्छा मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This Hare Krishna Mahamantra is a very powerful means to protect us from demoniac mentality. यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही शक्तिशाली साधन है हमें राक्षसी प्रवृत्तियों से बचाने का। Because when we chant the Hare Krishna Mahamantra, we are always in contact with the most pure. क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हम ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध चीज के संपर्क में हैं। And when we are in contact with the most pure, this is the protection from impurity which is coming from outside. जब हम सबसे शुद्ध वस्तु का संपर्क करते हैं तब हमें अशुद्धता से रक्षा मिलती है। As I said, by nature we are pure, and to be pure is actually very nice. We feel very happy when we are pure. हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव शुद्ध होना है। जब हम शुद्ध होते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति बहुत ही ज्यादा होती है। When we take shower in the morning, we feel very fresh and nice. जिस प्रकार जब हम सुबह नहाते हैं तब हमें बहुत ही फ्रेश और अच्छा लगता है। And when we are dirty, when there is some dirt external, then we feel very bad. परंतु जब हमारे ऊपर कोई गंदगी होती है, हम नहीं नहा पा रहे होते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है। But we are living in this environment which is very contaminated. परंतु हम ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जो हमारी शुद्धता को अफेक्ट करता है। You know, according to strict Vedic rules, you know, you have to take shower when you see somebody, well, you have to go to Ganga when you see somebody who is an atheist. Who is an atheist? You have to take snan in Ganga. वैदिक नियमों के अनुसार हम किसी भी नास्तिक पुरुष को या स्त्री को देखते हैं तो हमें गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए। In Kali Yuga, you know, if you live in Ahmedabad, you probably have to go to Ganga 10 times a day or not less than this. अगर आप अहमदाबाद जैसे किसी शहर में रहते हैं तो हमें गंगा स्नान के लिए इस नियम अनुसार 10 से कम बार तो नहीं जाना पड़ेगा। Vedas said that even if you see somebody who has bad mentality, even this is contaminating for your heart. अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मानसिकता बहुत खराब है तो खुद हमारे हृदय की शुद्धता के लिए खराब है। And we can see all these kinds of billboards and all kinds of nonsense everywhere in Kali Yuga. परंतु अभी हम हर जगह इस प्रकार के बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स देखते हैं। So how to protect ourselves from this dirt, from this contamination which is coming to us? तो हमें हमारी रक्षा कैसे करें इस अशुद्धता से? The only possibility for this is to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही संभव हो पाएगा। In the beginning of this chapter, actually, Krishna says a very important thing in the beginning of the 16th chapter. 16वें अध्याय की शुरुआत में कृष्ण भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु कहते हैं। He says that there are two natures, two sampat, Daivi sampat and Asuri sampat, the demoniac nature and divine nature. दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। Not svabhav, sampat. Sampat. संपत्ति। Sampat means actually wealth. दो प्रकार के संपत्ति होते हैं, मतलब कि धन होते हैं, देवी और आसुरी। This
Daivi and Asuri Sampat, wealth, means the certain energy which you have to do some work. ये जो देवी और आसुरी संपत्ति है वो इस चीज को दर्शाती है कि हमारे पास कोई ऐसी एनर्जी है, शक्ति है जिससे हम कोई काम करने वाले हैं. And Krishna says that if you have this Daivi Sampat, you will be liberated. You will go up, you will evolve, and you will go to the higher destination. कृष्ण भगवान कहते हैं अगर आपके पास दैवी संपत्ति है तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा स्थान मिलेगा. But Asuri Sampat, you will go down, you will go to Narak, you will suffer there. परंतु ऐसी आसुरी संपत्ति है तो हमें नरकवास हो सकता है, हमें नीचे जाना पड़ेगा. So these two natures are inside our heart. We have two natures, both natures are there. हमारे हृदय में ये दोनों प्रकार के स्वभाव हैं. Sometimes people say that there are two dogs who live in our heart. लोग कहते हैं कि दो प्रकार के श्वान यानी कि कुत्ते हमारे हृदय में होते हैं. One dog is a white dog, another dog is a black dog. एक जो श्वान है वो सफेद है और जो दूसरा है वो काला है. Asuri Sampat is this black dog, this bad mentality which we all have. असुर संपत्ति जो है वो ये काला श्वान है या काला कुत्ता है जो हमारे हृदय में है. And the good dog is a white dog, and it's also there. The divine mentality is also there. और जो अच्छी संपत्ति है, देवी संपत्ति है, वो व्हाइट डॉग यानी कि जो सफेद श्वान है होता है. And these dogs are barking all the time. They're always barking. Oh, oh, oh. और ये दोनों कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं. And sometimes the black dog is barking very loudly. Oh, oh, oh. कभी-कभी जो काला कुत्ता होता है वो बहुत जोर से भौंकना शुरू करता है. You know, the black dog is saying to us, do something bad, you know, do this, do that, you know, get some money by dishonest means, you know, enjoy, enjoy, enjoy. This is the black dog is barking all the time. हमारे हृदय का काला कुत्ता हमेशा इस प्रकार से भौंकता है कि ये लाओ वो लाओ, सिर्फ भौतिक एंजॉयमेंट के लिए आप कुछ भी गलत कर सकते हो. And the white dog sometimes also barks very gently. जो सफेद श्वान है वो बहुत धीरे-धीरे कभी-कभी बोलता है अच्छी बात. So there is this yuddha within our heart. ये बहुत ही बड़ा युद्ध हमारे हृदय के भीतर चलता है. Therefore, Shri Krishna, he told Bhagavad Gita on the battlefield. इसी कारणवश कृष्ण भगवान ने भगवद गीता एक युद्ध स्थान पर बताई. Because this battle is going inside. क्योंकि ये युद्ध हमारे हृदय में ही हो रहा है. So the question is, you know, what shall we do to make this Daivi mentality, Daivi Sampat more strong? प्रश्न ये है कि हमारे हृदय के देवी संपत्ति को और ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? And the answer which is given, you know, if you want to make one dog strong and one dog very weak, just don't give food to one dog. इसका एक ही उत्तर है. अगर आप एक श्वान को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और दूसरे को कमजोर बनाना चाहते हैं तो हमें एक को खाना देना पड़ेगा और दूसरे को नहीं देना पड़ेगा. Don't give food to this black dog and only feed the white dog. इस काले श्वान को आप खाना मत दीजिए और सफेद श्वान को खाना ज़्यादा दीजिए. And for that, we have this temple, for that we chant Hare Krishna, and for that we preach, and for that we read Bhagavad Gita. और इसीलिए ये मंदिर है, इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और इसीलिए हम भगवद गीता का पाठ करते हैं. And basically this is my humble request to you. Please remain pure, please remain innocent, read Bhagavad Gita every day, protect yourself from this external contamination, and ultimately be happy. महाराज जी का एक विनम्र निवेदन है कि
हम हर रोज इस भगवद गीता का पठन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इससे हम अपनी निर्दोषता और हमारी शुद्धता की रक्षा करें और अल्टीमेटली आनंदित रहे। Krishna wants us, his sons and daughters, his children, to always become happy, to always be happy. भगवान कृष्ण हम जीवों को जो कि उनके पुत्र और पुत्री हैं उनको हमेशा आनंदित रहे ऐसी इच्छा रखते हैं। Therefore, he came as Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 years back. इसी कारण 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। And he said, in this age of Kali Yuga, there is no rules. और उन्होंने बोला कि इस कलयुग में कोई भी प्रकार के नियम नहीं है। You cannot follow very strictly all the Vedas and all the rules of Dharma Shastra. There is no way. वैदिक नियमों का पूरी तरीके से पालन इस कलयुग में संभव नहीं है। There is only one means to remain always pure, is to chant the holy name. इस जगत में कलयुग में शुद्ध रहने का एक ही उपाय है, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। Some 40 years back, my friend, when I was a student, postgraduate student, I was doing my PhD degree, he gave me mala and he said, you please try to chant Hare Krishna mantra. महाराज श्री 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब स्वयं वो PhD कर रहे थे रशिया में, तब उनके एक मित्र ने उनको भगवद गीता दी थी और उनसे एक अनुरोध किया था कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला कीजिए। And at that time I didn't know anything about Krishna, I didn't know anything about Bhagavad Gita, I just had some little respect and some love to my friend. महाराष्ट्र लोग उस वक्त भगवान कृष्ण, भगवद गीता, इन सब चीजों के बारे में उनका ज्ञान नहीं था, परंतु उनके उस मित्र के प्रति उनके प्रेम और रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने ये चीज आज शुरुआत की। And I said to my friend, okay, I will chant this Hare Krishna mantra on these beats, but when I kind of become bored and when I don't like it, I will stop chanting. महाराष्ट्र ने ये बोला कि मैं जब तक शुरुआत तो करूँगा, पर मुझे अगर इससे बोर होने लग जाएगा, तो फिर मैं बंद भी कर सकता हूँ। So far 40 years I am still chanting, no problem. परंतु महाराष्ट्र ने पिछले 40 साल से लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। This is the power of the holy name. ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति है। It purifies your heart, it purifies your mind, and ultimately it purifies your existence. यह हमारे हृदय, मन और हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को शुद्ध बना देता है। Therefore, please chant always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए महाराज जी हमें अनुरोध कर रहे हैं कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. किसी को प्रश्न है तो माला जी से पूछ सकते हैं। Any question? Yes. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, I would request you to elaborate a little more on the point you shared with us. There are two dogs inside us, positive dog and negative dog, and the one who wins, to whom we feel more. So, if you can elaborate a little more, it is simple to us. Little elaboration on this analogy, big dog and good and प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जो सफेद श्वान और काले श्वान के बारे में जो महाराष्ट्र ने उदाहरण दिया था, उसके ऊपर और विस्तार प्रभु जी महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। We have some scars of the past, some previous experiences of the past. हमारे कुछ ऐसे संस्कार और कुछ ऐसे पहले के अनुभव होते हैं। And whatever memories we have, it remains with us and it has some energy. हमारे साथ जो हमारी यादें हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ शक्ति आती रहती है।
elaborately explained in Yoga Sutra by Patanjali Muni, how it happens. पतंजलि जी के योग सूत्र में इसमें बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है. So when there are some samskaras with some energy, this samskaras with energy, when we see some external trigger which awakens these memories, we want to do the same thing. जब हमारे अंदर कोई चीज का कोई संस्कार या कोई याद होती है और वही चीज के बारे में जब हम बाहर उसी तरह की कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे अंदर उस प्रकार की इच्छा को ट्रिगर कर सकता है. Like if people would take some drugs or some alcohol or something like this, and then they get this experience, and then they see alcohol again, and then the desire to repeat this experience come back. जब लोग ड्रग्स, मदिरा, इन सब की आदत जिनको लगती है, जब ये सब पदार्थ अपनी आंखों के सामने वो देखते हैं, तब उनकी इच्छाएं वापस जागृत होने हो सकती हैं. And in the same way, also good experiences which we have, this white dog, also have some energy. जो अच्छे अनुभव है, अच्छी यादें हैं, उसके पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, जिसको यहाँ पे उदाहरण रूप में सफेद स्वान बताया गया था. We conduct our life on the basis of the samskaras which we have in the mind, of the basis of our memory. हमारे जो संस्कार है, उसके हिसाब से या फिर हमारी यादों के हिसाब से, जो हमारे दिमाग में मेमोरीज है, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है. And being intelligent beings, we can choose between the good and bad. परंतु हम कुछ भी करने से पहले ये एक चॉइस कर सकते हैं, एक चुनाव कर सकते हैं कि हम अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे. Every bad action of us will make us more prone, will reinforce our bad nature, and every good act will reinforce our good nature. जब भी हम कोई खराब क्रिया करते हैं, वो हमारी खराब वृत्ति का पोषण करती है, और जब भी हम कोई अच्छी क्रिया करते हैं, वो हमारी अच्छी वृत्ति का पोषण करती है. Therefore, by using our discrimination, our intelligence, we have to, knowing what is good, what is bad, we really have to avoid something which is bad and strengthen something which is good. इसलिए हमें पर अपनी बुद्धि, अपनी डिस्क्रिमिनेशन को यूज करके ये देखते रहना चाहिए कि हम अच्छी चीजों का चुनाव कर रहे हैं या बुरी चीजों का चुनाव कर रहे हैं. But sometimes it's very difficult. Even Arjuna says, what is the force which pushes me to do, even though I don't want to do it? परंतु ये चुनाव कई बार बहुत ही मुश्किल होता है. जैसे कि यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि कभी-कभी हमें कोई खराब चीज करने के लिए कोई बाधित कर रहा हो, वैसी प्रतीत होता है. Sometimes we feel that we're being forced to do it, even though we know we shouldn't do it, right? कभी-कभी हमें लगता है कि कोई खराब चीज हमें कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए आंतरिक रूप से. But there is a solution for this problem as well. परंतु इसका भी एक सॉल्यूशन है. Yes, we are weak. Sometimes we cannot avoid doing some bad things. कुछ चीजें हम नहीं अवॉइड कर सकते. But because of the power of association, it can quickly change us. If we closely associate with pure people, with saintly people, this influence of saintly people will give us strength to resist from these tendencies. जो साधु स्वभाव के लोग हैं, उनके साथ कंटिन्यूअसली संगत करने से इस प्रकार की अच्छी वृत्ति का पोषण होता जाएगा. And therefore, Vedic scriptures, they give the rules, but they always stress sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, satsanga. सारे जितने शास्त्र है, वो नियमों के ऊपर भार तो जरूर देते हैं, परंतु साधु संघ के ऊपर सबसे ज्यादा भार देते हैं. Because by associating with the sadhus, you'll get their strengths, not your own strengths. By your own strengths, you may not be able to resist it, but by their association, you will be able to protect yourself. क्योंकि साधु स्वभाव के लोगों के साथ जब हम संगत करते हैं, तो हमें उनकी आंतरिक शक्ति भी मिलती है. अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति से ये
चुनाव नहीं भी कर पाते तो उनकी आंतरिक शक्ति की मदद से हमें चुनाव कर सकते And हैं। contrary is also true. और इसका विपरीत भी सत्य है। Asatsangam, gives you a lot of strength to do some nonsense. जो असत्संग है, खराब लोगों की संगति है, वो हमें शक्ति देती है, परंतु खराब चीजों का चुनाव करने की। Not even chizon, if you just see Doordarshan or whatever, if you see TV, then this is a satsanga. और बहुत खराब चीजों भी नहीं, अगर हम छोटे मोटे टीवी दूरदर्शन भी देखते हैं तो भी ये सत्संग की श्रेणी में आ सकता है। So actually it's a question of association. We should avoid bad association and strive for good association. और ये सब कुछ हमारी संगत के ऊपर निर्भर करता है। जब हम अच्छे संगत के लिए प्रयासरत रहेंगे तो हमें इसका परिणाम मिलेगा। Thank you. Srila Prabhupada ki। तो किसी को जो प्रश्न है महाराज जी को प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम महाराज जी के लिए एक बार धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। अनाउंस करने की 18 तारीख होली धुलेटी है। उस दिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का उस दिन आविर्भाव हुआ है, जिसको हम गौर पूर्णिमा कहते हैं। तो गौर पूर्णिमा के दिन शाम के समय बहुत बड़ा अवसर है, भगवान का अभिषेक होगा, नया श्रृंगार होगा भगवान को, और भंडारा रहेगा यहाँ पे शाम के समय पे। तो शाम को 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा। तो 18 तारीख